हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ई कॉमर्स में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के कौन कौन से लिमिटेशंस हैं, कौन कौन से इसके वीक पॉइंट्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब तक हम इंटरनेट को एज अ स्ट्रॉन्ग तरीके से, एज अ पॉजिटिव वे में डिस्कस कर रहे थे कि इंटरनेट हैज़ सेवरल यूजेस एंड इम्पोर्टेंस। ओके, अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट इज़ वेरी यूजफुल। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम लिमिटेशन एंड द कॉन्स ऑफ द इंटरनेट। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम एज अ लिमिटेशंस डिस्कस कर सकते हैं ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, सो इंटरनेट रिटेलिंग इज एडवांटेजियस इन मैनी वेज, so there are also certain limitations or disadvantages that one cannot ignore completely। आप उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते अगर आप ऑनलाइन बिजनेस को प्रोसीड कर रहे हैं। so following are some of the limitations of the web retailing। internet advantages in many ways, so however there are also certain limitations that one cannot ignore completely। Following are some of limitations of web retailing। So first one limitation is unfulfillment। Unfulfillment। Okay, the major issue facing internet retailer is unfulfillment or in the ability of business deliver to customer order accurately। Most delivers by internet companies contain some errors। जब भी हम किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को करते हैं तो उसमें एरर्स आने लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती या फिर जो भी हमारा जो रिक्वायर्ड क्लिक है, फंक्शन है, वो प्रोसीड नहीं हो पाता। सो इट इज ऑल्सो वेरी बिग issue or problem of the internet। whenever you trying many times, error occur, that is also a very big issue। okay, so good ordered or disposal goods orders or for special occasion like Christmas, Diwali, etc. are delivered late। ठीक है, so internet companies outsource such service to parcel couriers, so it is also very big problem। second one is security concern। सिक्योरिटी कंसर्न, हालांकि बहुत सारे
एडवांटेजियस प्रोस्पेक्ट हैं इंटरनेट के, लेकिन अगर मैं लिमिटेशंस एज अ लिमिटेशन डिस्कस कर रहा हूँ तो इसके कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो प्रॉपर हैं, जैसे कि सिक्योरिटी कंसर्न. A major barrier to the use of internet for the transaction is security. There is a need for the secure electronic transaction which will allow credit card holder and merchant to the authentic each other during on internet transactions. ठीक है, तो प्रॉपर सिक्योरिटी कंसर्न होना चाहिए और होता भी है, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस ऐसे भी फाइंड आउट होते हैं जहां सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज आते हैं. ठीक है, या फिर जैसे कि डेटा लीक हो गया, या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन आपने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की ट्रांजैक्शन करी है तो वो प्रॉपर प्रोसीड नहीं हुई. ठीक है, और आपका अमाउंट डिडक्ट हो गया. सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम आल्सो कम अंडर एज अ लिमिटेशन ऑफ द इंटरनेट. थर्ड वन है नेटवर्क लिमिटेशंस. दैट इज आल्सो वेरी बिग इशू. नेटवर्क लिमिटेशंस. ठीक है, so sometime network creates number of problem in the business transactions. In electronic retailing, visual impact of website is very important, but it arrays conflicts just because of the network issues. So graphic and multimedia attribute assume that the customer end has access to the high specification PC. Customers are frustrated when they experience slow data transfer. ठीक है, so next one is demographics. Web applications should demonstrate clear relevance to the customer base. The page on website should be targeted at a specific online customer group. These pages should be dynamic enough to cope with the changing interest of the customer groups. Okay. Culture. Customers should feel comfortable with the electronic shopping. However, purchasing over the internet is fraught with the difficulties. Customers are reluctant supply their credit and the card detail over the internet. They consider it is too risky and fear breach of the security. So popular web browsers have incorporated secure payment encryption. Experiment on the payment without having to transmit card detail over the internet have been unsuccessful. नेक्स्ट वन है इजी टू हैक. सारे पॉइंट इजी हैं इसलिए मैं डायरेक्ट उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. So there is a no need of detailed explanation in the Hindi also. It is often easier to hackers to obtain credit card details passed over a cordless or mobile telephones also. After that, next one है social acceptance is doubtful. The commercial success of internet technology depend upon the fundamental questions of social acceptance. Only when users of technology are motivated to become customers, electronic commerce will flourish. Okay. And the last limitation of the internet is size of the internet market. While the home PC market is growing at a rapid speed, the home internet market should also match the trend. It means that people should become very familiar, not only the personal computer, but should have access to internet and use it quite frequently. Okay. So these are certain limitations of the internet. Unfulfillment, security concern, network limitation, demographics, culture, and easy to hack. Okay student, thank you very much. And again I am saying, if you have any problem, any doubt, then you can again discuss.
So these are the basics of computer applications, and easily you can understand with the simple terms. So this is all about limitations of internet. So this topic is completed. If you have any problem, then you can again discuss. Okay. But first of all, you have to learn. You have to study this topic. Doubts आपके तभी आएंगे जब आप इसको पढ़ोगे. ठीक है. So I request to all students, please listen very carefully and study very attentively. Okay. So you can sort out your problems. You can find your problems. After that, your problems will be sorted out by me. Okay. So first of all, again I am saying, please learn, please study, please view lectures. Okay. So it is also very important. So okay, students, thank you very much.